So here is interesting problem. So generally we are given this single source BFS. जिन लोगों को BFS नहीं पता है तो मैं बस बता देता हूँ. एक है A, एक है B और उसके बीच में है कुछ सेल्स. तो हम क्या करते हैं उसको डिस्टेंस हम लेवल बाय लेवल जाते, जैसे कि इधर 1 1 बट इधर गए तो 2, इधर गए तो 2, फिर इधर गए तो 3, इधर गए तो 2. तो इधर डिस्टेंस क्या हुआ फर्स्ट 2, बट यहां से गए तो 3 एंड देन 4. So this way, this is only for source A to B. Now this game is leveled up. Generally हम लोग डिस्टेंस एरे में ये रखते थे एंड देन वी वुड कंपेयर कि अगर मैं यहां तक आया हूं और यहां तक इंटरमीडिएट प्रॉब्लम यहां पे आया हूं और उसका डिस्टेंस 2 है, but from this place to this, if the distance is 4, then obviously I will be honoring the first distance 2. This way normal Dijkstra was working. Now we leveled up and we went to multi-source BFS. तो इसमें क्या दिया है आपको A, B, C, which is denoted by 1. These are the cities and these are the blank spaces. Problem ये है ऐसा blank space ढूंढो जहां से all three cities are at minimum distance. So what you will need, obviously you will need distance array. But now one more thing. Because we'll be doing the BFS for all these cities at one go, that's why we will need something where we are be sure that we have the cumulative sum of the distance array, because A is going to run its BFS and we will put it in some distance array whenever it runs its course. उसके बाद क्या है, मुझे पता भी तो करना है कि ऑल सिटीज आर विजिटेड, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट टाइम करता हूं तो मेरा विजिट एरे मुझे ऐसे करना है 1 1 1. फिर मैं बी के लिए करता हूं तो ये हो जाएंगे 2 2 2 एंड ऑब्वियसली डिस्टेंस एरे सेम रहेगा जिसमें हम अपडेट करते रहेंगे हमारे डिस्टेंस. थर्ड टाइम इट विल बी 3 3 3 बिकॉज नाउ द सिटी 3 इज ट्राइंग इट्स रनिंग इट्स कोर्स और उसमें भी डिस्टेंस एरे हमारा होगा. इसी वजह से हमें तीन चीजें चाहिए. एक तो हर टाइम मैंने विजिट किया है या नहीं वो सेल, उसके बाद डिस्टेंस एट दैट सेल. सो दिस एरे विल बी सेम अक्रॉस ऑल थ्री सिटीज and then there will be CNT array. This array will be same because if the cities are 3, your distance should be 3. That's why this CNT array will be shared and distance array will be shared when you run for all three these cities. But visited array will be refreshed every time. So this is my simple algorithm and just run it as a try run over here. So अभी मैंने फर्स्ट टाइम क्या किया है, ये मेरा इनपुट है C, P, A, these are three cities. I will run it for A. ये मेरा डिस्टेंस है. तो यहां से शुरू किया, ऑब्वियसली 0 है तो नेबर में 1 हुआ, इधर भी 1 हुआ. यहां से इसको अगर लेना है तो नेबर से 1 + 1 2, इधर 2 हो गया, इधर भी इससे 2 हो गया, यहां से 2 हो गया, 2 + 1 3, 2 + 1 3, उसके बाद इधर 4 हो गया. So this way I am doing it. Now next thing is CNT array. As I said, this is the first run, so that's why each cell is visited first time. 1 1 1 return, no brainer. Next time में गया भाई B array के लिए, because I said the distance array is shared. Again I'll be updating the same thing. So उसमें क्या करेंगे, डिस्टेंस IJ का जो भी है उसमें प्लस कर देंगे जो हमारा प्रीवियस लेवल है. तो मैंने अभी पिछले वाले टाइम क्या किया था, इधर 0 था, अभी मेरा 4 हो गया. Why? I will start from this path. ठीक है, इधर से स्टार्ट कर. So this is B. 3 + 1 4, 3 + 1 4, इधर 2 है और 2 को बिकॉज यहां से 1 है और यहां से 2 है तो क्या हो गया, इधर का डिस्टेंस प्रीवियस वॉज 2 एंड दिस इज 2 स्टेप्स अवे फ्रॉम इट. 2 + 2 4, ऐसे 4 हो गया दोस्तों. इधर भी सेम कहानी है क्योंकि ये 2 था प्रीवियसली एंड दिस इज अवे फ्रॉम इट. 2 + 2 4. So this way you got the distance. This is 1, but from here 1 2 3. So 1 plus this 3 became 4 here. This way B array is created and CNT array, of course, it is
2, 2, 2 because we visited second time. Now next part is C. City C is situated right over here. We have run the same course. 4 is not updated because we started from here. 4 plus 1, 5. 1, 5. 5 plus 1 again 6 because 4 plus 2 is 6. So this way we created this. Now last step हमारा क्या बच जाता है दोस्तों? That step where if the cities are equal, all the cities when their BFS run course is run A, B, C. इसके लिए BFS run कर दिया. अभी हम क्या करेंगे? We will go through grid IJ for all cells और उसमें हम लोग चेक करेंगे कि आपका CNT एरे में इट इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ सिटीज. इफ इट इज इक्वल तो हम लोग क्यूमुलेटिव डिस्टेंस जो है डिस्टेंस सम में उसका मिनिमम ले लेंगे. सो रिजल्ट जो भी है वो कंपेयर करेंगे इफ जो प्रीवियस हमारा जब डिस्टेंस इक्वल टू द नंबर ऑफ सिटीज हुआ था वो डिस्टेंस एरे में कम है या नहीं. अगर है तो वो मिनिमम ले लेंगे. दिस वे विल बी रनिंग दिस. This is very beautiful problem and I will show you the pseudocode right now. Just 1 minute. Yeah, this is the pseudocode. You take wherever the city is one, you run the BFS over there. Now over here, you are going to add the current item to the distance. And then this is interesting thing. कि मैं यहां पे आ तो गया. उसके बाद मैं क्या करूंगा? पहले मैं Q को empty अगर नहीं है तो पोल करूंगा. X, Y और डिस्टेंस एरे आ जाएगा. अभी चारों डायरेक्शन में हम लोग प्लस 1 कर देंगे. सी डिस्टेंस प्लस 1 कर देंगे और डिस्टेंस एरे और विजिटेड एरे हम लोग हर बार अपडेट कर रहे हैं. बट visited is visited that will be flushed all over again. See इधर नया इंस्टेंस बना रहे हैं. आप याद रखिएगा डिस्टेंस हमको क्योंकि प्रीवियस ऑपरेशंस भी हमको मायने रखने हैं क्योंकि हमको ये नहीं फाइंड करना ए टू बी. हमको फाइंड करना है ए बी सी इनमें से किधर ऐसा सेल है जिधर मिनिमम है. दैट्स व्हाई डिस्टेंस एरे इज ऑनर्ड एंड द सेकंड थिंग इज विजिटेड काउंट इज आल्सो ऑनर्ड बिकॉज हमको ए बी सी तीनों विजिट हुए हैं. इसी से पता चलेगा. That's why you will need this. Otherwise, it is a simple BFS where whenever you get the city, you push it to do the BFS course. This is simple BFS. Rest, when everything is taken care of, I see visited count is equal to total sources, which I have computed here. The total services count, there will be one variable where total sources plus. As in when one is visited, while do the total sources. So total sources is count of list of cities. Now visited count is right over there. If it equals, then I will be computing the minimum distance. If you really loved this solution, try to do it on your own. Otherwise, I'll be pasting the solution as well. So if you like this, please hit that like, share and subscribe button. And I'll keep sending you such videos. Because these are the twisted form of normal problems and I do have a bank of it. This question bank is going to help you in the long run. Thank you for this. Please keep visiting Sharda Learning Center.